we are going to start life processes. So first of all, we have to know life. What is life? Life is a series of life processes. Series of life processes. Series of life processes. You are familiar with different kinds of life processes such as digestion, respiration, circulation, etc. All the life processes are interconnected with one another. Any one of them get disturbed, life will be placed in danger. As for example, digestion. If there is no digestion take place, then the nutrient will not be absorbed and life will be placed in danger. Next, respiration. If respiration doesn't occur, it means energy is not supplied to the body. In the absence of energy, the body part do not get energy for its running, and hence the system will collapse. One of the most important thing is movement. It is the most important distinguishing feature of living being. Movement is of two types. One is visible movement, and another is invisible movement. Invisible movement. Visible movement is observed by ourselves in any living being. As for example, we are moving from one place to another, moving our different body parts. These are the visible movement. But some of the movement that is continued in our body and not observed by ourselves, such movement are said to be invisible movement. As for example, movement of substances within the body. Movement of substances within the body. That is invisible movement. Invisible movement is also termed as growth movement. Invisible movement is also termed as growth movement, but visible movement is not growth movement. One can distinguish visible movement only, but invisible is observed by changing in shape, size, and so on. Next thing is transport. Transport. In all living beings, the substance are transported within the body. In animals, it is called circulation, and in plants, only two types of substances are transported: water and food material. Transport of water is called ascent of sap, and transport of food material and organic matter is called translocation. The transport is also essential. If there is no transportation of substances within the body, then the substance will not be supplied to different body parts and therefore collapse its run. Hence, transport is also essential. On the basis of above fact, one can say life processes are essential. And on the basis of such life processes, one can say the individual is living or non-living. The given thing is living or non-living. Besides it, one of the most important thing is protoplasmic interaction. One can say
protoplasmic interaction. Protoplasmic interaction. On the basis of cytoplasmic streaming, there is an interaction between protoplasmic content. Such interaction help in distinguishing between living and non-living. As for example, some of the students start committing disturbance in the classroom. Then the teacher has punished the student and thrown it out from the classroom. Suppose he or she will lose his or her life. But when he had kept a certain thing such as cell phone, the teacher snatched it and thrown it out of the classroom. It also get broken, but this can be repaired and run as usual. But when a person loses its life, it cannot be returned back. What is thrown out from the living being, as they have thrown out from the classroom and lose their life. So that is interaction between protoplasmic content. Protoplasmic interaction is lost and it cannot be returned back. Therefore, we can say there is no life. There is no life. So, in other words, we can say that life is series of life process or protoplasmic interaction. Now we know the life processes. What are life processes? Life process. Different tasks performed by our body system. Our body system perform different tasks to regulate the existence. The task performed by an organism to regulate life is called life process. As for example, digestion, respiration, circulation, transportation, and so on. Next thing is nutrition. Nutrition refers to intake of food. Intake of food and its utilization. Intake of food and its utilization is known as nutrition.
The organism take food, and food undergo different processes, and after that it get absorbed, and after absorption it is used by our body system. The intake of food and its utilization, that is nutrition. Nutrition is classified into two categories: autotrophic, trophic nutrition, and heterotrophic nutrition. Trophic nutrition. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Auto means self. Self. Nutrition means nutrition. The organism responsible for responsible for making their own food. The organism that are self-responsible for making their own food. It means they prepare their own food. अपना food जो है वो स्वयं बनाते हैं. So such organisms are said to be autotrophic. As for example, green plants. Green plants. Green plants. Green plants use inorganic component of the surrounding. Inorganic components are carbon dioxide plus water. They use carbon dioxide and water. And carbon dioxide and water. In the presence of sunlight, and by chlorophyll containing cell, containing cells, they prepare their. अब जैसे देखो, I have given example of green plants. Autotrophs, those organisms that are self-responsible for making their own food. वैसा organism जो क्या है अपना food स्वयं बनाता है. Self-responsible for making their own food. तो वैसा organism कौन सा होता है? तो green plants. Green plants क्या करता है? खुद वो अपना food बनाता है. खुद food वो अपना बनाता है. वो क्या करता है? सराउंडिंग से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है? तो ऑर्गेनिक जो होता है उसमें क्या है? कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जो होता है उसी को हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, बट ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, these are said to be inorganic. Oxides of carbon, carbonate and hydrogen carbonate being rich in carbon, having carbon as its constituent, it is said to be inorganic. So here the inorganic substances
carbon dioxide and water. Plants use carbon dioxide and water. Carbon dioxide from the surrounding. It means atmosphere. Stomata use it with the help of stomata use it present in the leaf. लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है. स्टोमाटा से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आए. वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट. वाटर क्या है, रूट एब्जॉर्ब करेगा एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीफ. तो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के एब्सेंस में ये नहीं हो पाएगा. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और कौन बनाएगा, तो बाय क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स. सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, यानी लीफ में जो होता है, जो ग्रीन पार्ट है ना, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, तो उसमें क्लोरोफिल है. तो ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स के द्वारा ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या करेगा, कंबाइन करके अब फूड बनाएगा. फूड क्या बनाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट. क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा. इस तरह से ये फूड बना लिया. ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया, अपने बनाया है ना, अपने बनाया, इसलिए इसको क्या कहा गया, ऑटोट्रॉफ. तो ये क्या हो गया, ये बना लिया क्या, कार्बोहाइड्रेट. तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हेट्रो मीन्स डिफरेंट. And organism या nutrition means nutrition. तो nutrition take from others. Nutrition take from others. दूसरे से जो न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक. दूसरे से जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको हम क्या कहें, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Heterotropic nutrition. Hetero means different. Nutrition obtaining food. यानी obtaining food from different organism. Obtaining food from different organism. Obtaining food from different organisms. Different organism. So all organism except green plants. All organism except green plants are heterotropic. ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके सारे क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है. सारे ऑर्गेनिज्म आर हेट्रोट्रॉपिक. A few animals are also heterotropic. As for example, autotropic and heterotropic both. You are familiar with Euglena. Euglena is a protozoa. Euglena is a protozoa. But and heterotropic, but conditional autotropic. Conditional autotropic. A conditional autotropic कैसे? So as availability of food in the surrounding is finished, abolished, then it start producing food by photosynthesis. So photosynthesis is an example process of autotropic nutrition. Autotropic nutrition का ये process.
तो यूग्लिना क्या हो गया, दोनों हो गया, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बोथ। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डिफरेंट टाइप्स, अब वो क्या होगा? Types of heterotropic nutrition. Types of heterotropic nutrition. तो सबसे पहले है सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डिपेंड्स न्यूट्रिशन, हाँ, it is a type of nutrition, type of nutrition in which the organism obtain its food from dead and decaying matter, dead and decaying matter। ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा हुआ कि जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, डेड एंड डिकेइंग। डेड समझ रहे हो कि कोई डेड है ना, और डिकेइंग मतलब रॉटेन। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो वो क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, पारासाइटिक, पारासाइटिक न्यूट्रिशन, पारासाइटिक न्यूट्रिशन। पारासाइटिक न्यूट्रिशन क्या चीज है? तो पारासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ कि जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स एंड हार्म देम, दूसरे को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। तो ये क्या हो गया, पारासाइटिक, यानी लिविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आइदर लिविंग ऑन एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। The organism that derive food from other is called parasite, and the organism from nutrition is derived is called host। उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जिससे न्यूट्रिशन लिया गया वो होस्ट हो गया, और जो न्यूट्रिशन दूसरे से लिया वो क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। आई फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, symbiotic nutrition, symbiotic nutrition। Symbiotic nutrition refers to the nutrition in which both the organism are dependent, mutually dependent on one another। It means both of the organisms who are associated with one another for nutrition are mutually dependent on each other। मतलब कि अब जैसे देखो, तुम लोग को बता रहे हैं, तो हम लोग दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? तो आप हमसे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। तो सीख रहे हैं तो आपको बेनिफिट हुआ। आप क्या कर रहे हैं, स्कूल को फी दे रहे हैं, तो स्कूल को बेनिफिट हो गया, है ना। स्कूल के मेंबर क्या है, हम हैं, तो हमको बेनिफिट हो गया। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए।
दूसरा क्या है, हम लेते हैं एक प्लांट को एग्जांपल, प्लांट से जो रियल एग्जांपल, जैसे यू आर फेमिलियर विथ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट क्या है, जिसको कहते हैं दलहनी पौधा। तो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, एंड नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। तो इट सप्लाई नाइट्रोजन टू द leguminous plants, and in turn the green plants, leguminous plant is also green plant, so it prepare food as carbohydrate, so it supply food to rhizobium bacteria. So in this way rhizobium bacteria are dependent on leguminous plants, and leguminous plants dependent on bacteria. So both of them are dependent on each other for their nutrition, and hence we call them as symbiotic nutrition. Now I have introduced you about nutrition. You have to go through the chapter properly, and in next class I introduce you in detail about autotrophic nutrition. Okay, is there any problem? No. If you have any problem, then you have to make a comment on the platform, and then your problem will be resolved. Okay? Thank you.